Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with the following list of topics. So let's discuss. Before starting, I want to just take a few seconds in announcing that to get all our notifications of our upcoming courses, offers and programs, and also to get some of the free study materials, students as well as aspirants are requested to join our free WhatsApp group that is given in the link below. Do also join our Telegram channel for various updates associated with CNA and the preparation stages. So the link is directly in the description below. So now let's start with the session. The first topic says about the sexual assault of wife can take the form of rape. So it is basically telling about the marital rape. Okay. So यहाँ पे अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा there has been a judgment that sexual assault by a man on his wife can take the form of rape. And the Supreme Court said this in a Thursday in a significant judicial recognition of marital rape at present not recognized as an offense under IPC, that is the Indian Penal Code. See, when I talk about the domestic violence in India is an entrenched problem and it has only been exacerbated in recent years. If I say about some of the reports of this NCRB, that is the National Crime Records Bureau, the crime in India 2019 reported around 70% of women in India are victims of domestic violence, which rose during the time of the COVID pandemic. And one such manifestation of this domestic violence is marital rape. So this marital rape is an act of forcing your spouse, that means your wife, into having sex without proper consent in an unjust yet not uncommon way to degrade and disempower women. Today, if you see about marital rape, that has been impeached in many more than 100 countries, but unfortunately, India is one of the only 36 countries where marital rape is still not criminalized. And even though many legal amendments have been done in criminal law for the protection of the women, the non-criminalization of marital rape in India undermines the dignity and human rights of the women. तो आज मैं अगर बोलूं about the status of marital rape in India, so the definition of rape codified under section 375 of the IPC that includes every forms of sexual assault that may be even involving some number of non-consensual intercourse with a human. Non-criminalization of marital rape in India emanates from exception 2 to section 375. So this exception 2, which is directly the exception in case of marital rape, exempts unwilling sexual intercourse between a husband and a wife over 15 years of age from section 375's definition of rape, and thus immunizes such acts from prosecutions. So therefore, this marital rape is against various number of legal and constitutional rights. If I see about the doctrine of coverture, okay, इसको बोलते हैं doctrine of coverture, COVERTURE, coverture. तो इसमें क्या बोला गया है कि like this non-criminalized nature of marital rape emanates from the British era, and the marital rape largely influenced by and derived from by the doctrine of merging the women's identity with that of her husbands. तो ये है doctrine of coverture. मीन्स आज हम लोग women को एक्स्ट्रा करके अभी तक हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए. So the woman is recognized by the identity of her husband, and this is directly the patriarchal norms that we can still see in our society. Also, these things are violative of Article 14 because marital rape violates the right to equality enshrined in Article 14 of the Indian Constitution. It also defeats the spirit of Section 375 of the IPC because exempting husbands from punishment is entirely contradictory to that objective, as the consequences of the rape are the same whether a woman is married or unmarried. Also, it violates the Article 21 because if you see, according to the creative interpretation by the Supreme Court, rights enshrined under Article 21 includes the rights to health, privacy, dignity, safe living conditions, and safe environment, among others. And even one case which is associated with this marital rape, which is the case of Krishnappa versus the state of Karnataka. In this case, the Supreme Court directly said that sexual violence, apart from being dehumanizing,
act is a very unlawful intrusion of the right to privacy and sanctity of a female. So we could see that today, though such number of things are going on rapidly in the society in some of the another manifestations of domestic violence, so India's law now affords husbands and wives separate and independent legal entities. And therefore, it is high time that the legislature should take cognizance of this legal infirmity and bring marital rape within the purview of the rape laws by eliminating Section 375, Exception 2 of the IPC. तो ये अभी करना बहुत जरूरी है. तो इसी के ऊपर किसने यहाँ पे तर्क दिया है? It is the Supreme Court. And Supreme Court directly said in a significant judicial recognition that marital rape को recognize करो. Okay, इसको बताओ कि this is directly the marital rape is something which is can be defined under the section 375 and it's directly a marital assault upon the women. तो इसको सेंसिटाइज करो, इसको लेजिटिमाइज करो. तो ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. अभी देखते हैं लेजिस्लेचर इसके ऊपर क्या करते हैं. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स यू कैन से व्हेन रेप इज अलाउड बाय लॉ. So you can study this, okay, कि कौन सा countries में we can see that has criminalized the marital rape and which countries have not criminalized yet. So India out of 36 countries में पड़ता है. In this total world we can see hardly around 36 countries has not criminalized the marital rape thing. तो उसमें इंडिया आता है. उसके साथ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, चाइना ये सब भी आता है. लेकिन आउट ऑफ 104 countries across the world have criminalized marital rape. ठीक है. तो ये अभी हम लोग का एक नेसेसिटी सा बन गया है. ठीक है, क्योंकि कोविड टाइम में ये बहुत बढ़ गया था. सो we'll have to look after that what the legislature does in this perspective. चलो नेक्स्ट तक आते हैं. सिंगल women gets abortion rights. तो ये केस शुरू होता है एक वुमेन से जो कि 25 साल की थी. ठीक है. सो शी वाज इन अ लिविंग रिलेशनशिप with a guy. Okay, so like she was pregnant. She was pregnant for around 24 weeks. ठीक है. So 24 वीक्स के बाद तो जब ऐसा एक सिचुएशन आया कि लड़की ने बोला लड़के को कि लाइक वी विल सून मैरी, तो अभी लड़के ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था. एंड देयरफॉर शी पुट अ केस अगेंस्ट दिस एक्टिविटीज अगेंस्ट द, क्योंकि यहाँ पे उनको 24 वीक्स जब वो पहुंच गई थी तो उनको हाई कोर्ट ने अलाउ नहीं किया क्या करने के लिए, एबॉर्शन करने के लिए. ठीक है. तो अभी ये क्लेम कर रही है बिकॉज इन दिस जो हम लोग का एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट. ओके, सो जो 1971 में बना था, जो हम लोग बाद में हम लोग ने उसको ऑल्टर किया था अराउंड 2020s. तो एट सच पॉइंट ऑफ टाइम वी कुड सी दैट यहाँ पे बोला गया है कि फॉर सिंगल वुमेन विद प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 एंड 24 वीक्स आर एंटाइटल्ड, लेकिन उनका 24 वीक्स से ज्यादा हो गया था, क्रॉस हो गया था. तो अभी हम लोग का जो हम लोग का लॉ है उस एक्ट के बेसिस से हम लोग का यहाँ पे प्रावधान नहीं है कि वो जाके अबॉर्शन कर सके. तो इसलिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले लिया गया था. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर किया गया था. सुप्रीम कोर्ट टुडे इवन से दैट जो भी हो, बी इट अनमैरिड वुमेन बी इट मैरिड वुमेन, अगर कुछ ऑप्शंस रहा, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहा, अगर कुछ वहाँ पे कंसिडरेशंस रहा, तो शी कैन डायरेक्टली गो फॉर अबॉर्शन. तो यहाँ पे सिंगल वुमेन का इक्वल राइट्स है एज कंपेयर टू अ मैरिड वुमेन. ओके, तो यहाँ पे ये 3 जज बेंच विच वाज लेड बाय D.Y. Chandrachud tried over the respective grief of a 51-year-old abortion law which barred unmarried women from terminating pregnancies that are up to 24 weeks old. Okay, तो यहाँ पे बोला गया है कि ला rights of the reproductive autonomy, dignity and privacy given unmarried women the right of choice as to whether or not to bear a child of similar footing as other married women. तो यहाँ पे ये तर्क दिया गया है. तो यहाँ पे जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है दैट प्रोहिबिट्स अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 and 24 weeks pregnant to abort with the help of registered doctors. So prohibiting single women with pregnancies up to 24 weeks from assessing abortion while allowing married women with the same term of pregnancy to able the care amounted to discrimination. तो ये आप लोग यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ये कर रहे हो, तो ये आप लोग को यहाँ पे अलाउ कर देना चाहिए. तो यहाँ पे इसीलिए अभी ये जो तर्क चल रहा है, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन that the MTP does not allows this lady to go for these abortions. ठीक है. तो अगर हम लोग देखें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अबाउट द अबॉर्शन लॉ, सी अंटिल 1960s abortion was totally illegal in India. ठीक है. And this was directly putting a fine as an imprisonment with a term of 3 years and a fine directly under the section 312 of the IPC. तो ये पूरा बैन था. लेकिन it was in the mid 1960s in the government set up by Santilal Shah committee and asked the group headed by Shantilal Shah to look into the matter of abortion and decide if India needs a law for the same. And based on this report only, Shantilal Shah committee report, ये बहुत important
कमिटी है, सिंस दिस थिंग्स आर डायरेक्टली इन न्यूज, तो ये कमिटी बहुत याद रखना, शांतिलाल कमिटी रिपोर्ट. So he went on to go for a medical termination bill, which was introduced in the Lok Sabha and Rajya Sabha and was passed by the Parliament by the time of 1971. Okay, so this law, that is this the medical termination of pregnancy of 1971, यहाँ पे सेक्शन दो 312 ऑफ आईपीसी है, ठीक है, दैट इज 1860. इट criminalizes voluntarily causing miscarriages. Okay, and this means that women herself or anyone else, including a medical practitioner, could be prosecuted for such an abortion which is directly going above this range. तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि like in this recent amendments, the parliament altered the law to allow for abortions based on the advice of one doctor for pregnancies up to 20 weeks. लेकिन पहले ये multiple doctors का था, ठीक है, and this modified laws needs the opinion of two doctors for pregnancies between 20 and 24 weeks. Okay, so today we have got a lot many number of issues where recognizing such acts with respective to a single woman. तो यहाँ पे उसी केस के लिए ये न्यूज में फिर से है. So therefore you should have to very understand the clear picture of what is the abortion things associated with this country of India. तो आज अगर मैं देखूं about India's legal framework on abortion is largely considered progressive, especially in comparison to many countries including the United States, where abortion restrictions are severely restricted, both historically and in present. Further, if there is a need for a serious rethink in public policy making, also accommodating all stakeholders, that means the single women's or the single mothers and their reproductive rights, rather than drawing red lines those medical practitioners cannot cross while performing abortions. तो यहाँ हम लोग को ये चीज देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक सिंगल वुमेन को अपना अबॉर्शन राइट्स दे सकते हैं. इफ टुडे वी आर गोइंग इन फॉर अ गुड प्रोग्रेसिव राइट्स फॉर द वुमेन्स और फॉर द लेडी हु इज डायरेक्टली फेसिंग अ अबॉर्शन इशू. ओके, तो यहाँ पे जब अबॉर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये सब इश्यूज सामने आते हैं. तो अभी देखते हैं यहाँ पे जो चंद्रसूद बोला गया है कि यहाँ पे कितना ये सफल होता है, कितना ये इम्प्लीमेंट होता है, वो इन द कमिंग टाइम्स वी विल डायरेक्टली नोटिस अपॉन. चलो नेक्स्ट पे आते हैं, माइनर सीकिंग अबॉर्शन. तो अभी यहाँ पे ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज बहुत बढ़ता जा रहा है, बिकॉज टुडे वी कैन सी दैट जो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर्स है, they are very much exempted from disclosing to the police the identity of the minors who have come in for abortion, the Supreme Court directed in their judgments. So today we could see that यहाँ पे एक चीज बोला गया है about the two laws or two acts which is the POXCO, okay, and जो है हम लोग का MTP. तो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि इनके बीच में एक हार्मोनी कीजिए आप लोग. ओके, देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द पोक्सो एंड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. Because today if you see that a registered medical practitioner is obliged under section 19(1) of the POXO Act to report to the police when a minor approaches him or her for her abortion. And a bench led by Justice D.Y. Chandrasud said in many cases that minors and their guardians opt to go for an unqualified doctor for abortion rather than risks being involved in criminal proceedings following a report under section 19(1) of the POXO. And if there is an insistence on this disclosure of the name of the minor in the report, minors may be less likely to seek out some of the remedies for safe termination of their pregnancies under the MT Act. तो ये यहाँ पे बोला गया है about the categories or associated declaration of the names of the minors who are going in for some number of abortion in some number of registered medical practitioners. तो अभी हम लोग अगर रिपोर्ट करें, बाई चांस ये अगर रिपोर्ट हो गया, तो ये डायरेक्टली एक क्रिमिनल लॉ बन जाता है अंडर सेक्शन 19(1) ऑफ द पोक्सो एक्ट. तो अगर यहाँ पे हम लोग जब पेरेंट्स या कोई भी एक माइनर चाइल्ड जाते हैं, तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, अनरजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ जाके वो लोग अबॉर्शन कराते हैं, एंड दिस में डायरेक्टली किल द गर्ल चाइल्ड. Okay, and this may directly kill the lady who is directly facing such number of abortion issues. तो यहाँ पे यही सब बोला गया है कि like the minor seeking abortions also has got the right to go for abortion with some number of unwanted pregnancies. and यहाँ पे जो डॉक्टर्स है, ये डॉक्टर्स को रिपोर्ट नहीं करने से भी चलेगा to the police under section 19(1) about the disclosure of the information of the person who has been aborted. ओके, तो यहाँ पे वही सब बात बोला गया है अबाउट सुप्रीम कोर्ट. ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, सपोर्टेज फॉर नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन डैमेज. तो टुडे इफ यू सी अबाउट दिस सपोर्टेज, तो ये जो नॉर्थ स्ट्रीम है, दिस नॉर्थ स्ट्रीम्स आर डायरेक्टली थिंकिंग
that the NATO formally labeled the mysterious leaks in the Nord Stream 1 and 2 pipelines detected earlier this week the result of deliberate sabotage and warned that such attack would be met with a collective response from the organization. तो यहाँ पे बोला गया है about the Nord Streams. तो Nord Streams कौन सा है? It consists of two pipelines which have two lines each. तो ये देख सकते हो. Okay, ये Nord Stream 1 है, ये Nord Stream 2 है. That is red line is Nord Stream 1, Nord Stream is Nord Stream 2. Green line. Okay. So this Nord Stream 1 was completed in 2011 and runs from an area which is known as Viborg. ये देख सकते हो Viborg यहाँ पे है. And in Leningrad, that is in Russia. Okay. And we can see about the Lubin. Okay. Lubin in that is near to Greifswald. तो यहाँ पे देख सकते हो this is Greifswald. And this is basically in Germany. Okay. So exact location क्या है? Exact location is directly the Lumbin over here. Okay. Lumbin बोलते जगह को. So this Nord Stream 2, which is green in color, which runs from this area of Ustluga. You can see Ustluga over here. Okay. And it goes from to Lumbin, to this area. That is in the same area of Germany. ठीक है. तो ये दोनों कहाँ से निकल के आ रहे हैं? रशिया से निकल के आ रहे हैं. Okay. And this was completed in around September 2021. ये रिसेंटली की बात है. Which has the capacity to handle around 55 billion cubic meters of gas per year if it becomes operational. So these twin pipelines together can transport a total of around 110 billion cubic meters of a gas a year to Europe for at least 50 years. Okay, so today if you see about that this Nord Streams, which crosses the exclusive economic zone of several countries like Russia, Finland. Okay, यहाँ पे देख सकते हो ये रशिया हो गया, यहाँ पे फिनलैंड हो गया, ठीक है. Then we can see about Sweden, then we can see about Denmark, ठीक है. Then we can see about Germany, and the territorial waters of Russia, Denmark, and Germany are oftenly uh, going through this pipeline. So today if you see about the नॉर्थ पाइपलाइन, ये अभी क्या हो गया है? ये अभी सपोर्टाज कर दिया गया है, ये अभी थ्रू द conflicts that is directly going on between this NATO as well as Russia. So today we could see that इसको एक बार उड़ा दिया गया है, इसको sabotage कर दिया गया है, ठीक है. और अभी because of the breakage और because of the breaking of this line, okay, तो यहाँ पे बीच में कहीं पे धुआं दिखाई दे रहा है, ठीक है. तो धुआं मतलब क्या? वो गैस निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए bubbles are getting created. So the pipelines are directly having the center of geopolitical tensions today in recent months that is happening between the Russia and Europe. ओके, तो अभी हम लोग को बस ये जो बाल्टिक सी है, तो ये डायरेक्टली एक बाल्टिक सी है, ये पानी का जगह है. तो यहाँ पे बीच बीच में हम लोग को क्या देखने को मिला? बबल्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अभी फट गया है. एंड दिस इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड and often has been criticized by various people associated with this European Union. Okay, तो यहाँ पे जो एक स्ट्रेटजिक लेवल वाला एम किया गया है अबाउट दिस नॉर्ड लाइन. ओके, तो यहाँ पे दिस नॉर्ड लाइन directly makes the European nations very much reliant on Russia for its natural gas production. ठीक है, तो जब ये खत्म हो जाएंगे, okay, which is directly which is directly a pipeline that has been today the center of some of the geopolitical tensions. Okay, so though Russia is very much eager to cut some of the gas supplies to Europe because Europe is directly coming in support of Ukraine, लेकिन today you see that with आज कट करके रखा गया था लेकिन कल से शुरू होता था. लेकिन वी कैन सी दैट अभी जब यहाँ से एक गैस पास ही नहीं होगा, सिंस दिस इज डायरेक्टली सबोटाज, तो आज ये ब्रेक कर दिया गया है, आज ये उड़ा दिया गया है. एंड इसलिए वी कैन सी दैट नेचुरल गैस इज डायरेक्टली लीकिंग इन द मिडल. तो अगर यहाँ पे काट दिया गया तो हाउ कैन रशिया कैन सेंड ऑल सच नंबर ऑफ नेचुरल एंड गैस रिजर्व्स. ओके, सो टुडे इफ यू सी अबाउट दैट, ये यहाँ पे जो टेंशन चल रहा है, ओके, we can see about some tensions that is occurring over here, which leads to a great number of uh, like confusion mainly created in these areas. Okay, and the leaks directly highlights the vulnerability of Europe's energy infrastructure and risks further increasing tensions between Russia and the West. तो ये कल परसों नया बात नहीं है कि रशिया में गो मतलब और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, दे मे यूज सम फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पावर ऑल्सो. तो ऐसा प्रोस्पेक्ट्स है अभी, ठीक है, बिकॉज द पाइपलाइन वाज वेरी मच सेंट्रल टू द एनर्जी नीड्स ऑफ द यूरोप. तो आज अगर ये कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों कर रहे हैं? आज यूएसए डायरेक्टली बोलेगा अभी यूरोपियन नेशंस को कि हमसे तेल खरीदो, हम लोग से गैस खरीदो. सो एवरीथिंग इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन सम ऑफ द इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये सबोटाज कर दिया गया है. मेनली इट इज अ सबोटाज डन बाय यूएस ओनली, क्योंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है Joe Biden, he only said about the sabotage of this Nord Stream. Okay, तो ये बोला ही गया था एक बार कि अगर रशिया यहाँ पे नहीं रुका तो हम लोग और ज्यादा करारा स्टेप्स लेंगे. तो ये करारा स्टेप्स क्या है? दिस इज डायरेक्टली द नॉर्थ स्ट्रीम ब्रेकेज.
अभी देखते हैं इसमें क्या हल होता है इन द कमिंग टाइम्स, लेकिन अभी फिलहाल इस नॉर्थ स्ट्रीम इज टोटली डिसफंक्शनल बिकॉज ऑफ द लीकेज दैट इज डायरेक्टली इन दिस मिडल। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग फिर से रिस्ट्रक्चर कर पाएंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल गोइंग टू द सर्फेस ऑफ द बेड ऑफ द सी, दैट इज द बाल्टिक सी। ठीक है, चलो तो ये न्यूज पे था। नेक्स्ट, मोर फॉरेन टेररिस्ट इन JNK आफ्टर अफगानिस्तान सिचुएशंस। ठीक है, तो देखो, जो दो वी कैन सी दैट द JNK द जम्मू एंड कश्मीर हैज रिड्यूस्ड, यहाँ पे टेररिस्ट जो कैप्चर किया गया है वो रिड्यूस हो गया है द टाइम्स बिफोर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाने के बाद तो यहाँ पे टेररिस्ट कंसंट्रेशन बहुत कम हो गया है। लेकिन जब से अफगानिस्तान में थोड़ा तसल हो गया, अफगानिस्तान में इशू हो गया है, तो यहाँ पे वी कैन सी दैट देयर आर वेरियस नंबर ऑफ इश्यूज डायरेक्टली कमिंग इन फ्रॉम इंडिया। क्योंकि अभी अफगानिस्तान के लिए जो टेंस सिचुएशन है, द नंबर ऑफ फॉरेन टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैज डायरेक्टली राइज्ड। ओके, जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद यहाँ पे राइज नहीं हुआ था, तो आज बहुत ज्यादा राइज हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अफगानिस्तान सिचुएशन। तो टुडे if you see about that Afghanistan's tough scenario is very much difficult for India to manage the world today over here, because what are the issues that is associating with this Afghanistan tensions for India? See, life and security of the Indian citizens in Afghanistan is directly a threat. Also, the threat of resurrections of terrorism is also there, such as groups such as Lashkar-e-Toiba, Jaish-e-Mohammed, that have been keeping base and training grounds along the southern province that border Pakistan could now have more ungoverned spaces to carry out attacks against India. Also, increasing power of Pakistan over Afghan affairs is one another major threat which is posing threat to the country of India. The fate of the Indian infrastructure projects, वो सब भी हम लोग का गया वहां पे। ओके, देन रेफ्यूजी इशू इज वन ऑन द अनदर इशू। अनस्टेबल नेबरहुड के लिए हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, कास्केडिंग इफेक्ट होगा। कल परसों अफगानिस्तान अनस्टेबल है, पाकिस्तान हमेशा अनस्टेबल ही रहता है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, इंडिया में ही आएगा। तो यहाँ पे इनके द्वारा वही बोला गया है कि ऑब्वियसली ये September 30 को ये रिटायर होने वाले हैं। ये DG है CRPF के, कुलदीप सिंह। तो इन्होंने बोला गया है कि लाइक बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान सिचुएशन, अभी यहाँ पे जो हम लोग का टेंस सिचुएशन है इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज ऑन राइस। क्योंकि आए दिन देखते रहते हो तुम लोग की लाइक आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई एक टेररिस्ट को मारा जाता है। ठीक है, तो इसके इसके इसका इसका वजह क्या है, इसका वजह बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट रीजन अफगानिस्तान एंड दे सपोर्टेड द टेररिज्म एक्टिविटीज ओवर हियर। ठीक है, तो ये छोटा सा एक न्यूज था यहाँ पे, तो ये देख सकते हो। चलो ठीक है, लास्ट में आता है एडिटिंग एडिटोरियल, दैट इज द इवॉल्विंग चेयर। तो ये बोला गया है अबाउट द CDS। ठीक है, कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो पोस्ट है अभी, जैसे यहाँ पे मिल गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी को। ठीक है, अभी ये 61 साल के हैं, तो ये 65 तक ये बने रहेंगे CDS, मतलब और 4 साल ये CDS बने रहेंगे। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि नेक्स्ट CDS किसको बनाया जाएगा। सी द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ CDS इज टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव लीडरशिप एट द टॉप लेवल, okay, and to the three wings of the armed forces, and also to help them improve conditions amongst them. So the imperative to create a CDS assumed great importance following the Kargil War of 1999, क्योंकि कारगिल वार में हम लोग ने देखा गया था कि what is some number of coordination, lack of coordination between all these three armed forces of our country. Okay, so despite securing victory in that war against the daunting odds, the absence of a CDS became evident in this war. And the issue of efficient management of the higher defense organization came into sub focus after the war, when the K. Subramanian headed task force was asked to examine the questions about the anticipation and detection of Pakistani intrusions in Kargil and the military response. So the strategic expert and his team highlighted the systemic issues bedeviling our national security structures, which include some of the poor coordination and technological inequities. So यहाँ पे the CDS, which is directly a post that will act as a single point advisor to the government of India, and the officer concerned will be in a position to advise on matters related to all these three services, be it army, be it navy, be it air force. तो ये हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे। Okay, so today if you go in favor of this the committees, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कमिटीज है, कारगिल रिव्यू कमेटी, ओके, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, नरेश चंद्र कमेटी, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स, तो यहाँ बहुत सारे कमिटीज ने यहाँ पे बोला गया है अबाउट द थिंग्स एसोसिएटेड विथ फेवर ऑफ CDS। क्योंकि अगर यहाँ पे CDS आ जाते हैं तो यहाँ पे CDS he will be a highly professional man who will go to facilitate jointmanship and render single point military advice. Also, this institution of CDS is best justified by the importance of strategizing for a robust and cost efficient national defense policy.
Also, India will be the only country in the world where the Secretary Department of Defense, which is generally a generalist civil servant drawn from the diverse background and who serves in the Ministry of Defense for a fixed tenure, has been made responsible for the defense of India and every part thereof, including preparation of defense. तो उनसे ज्यादा तो सीडीएस बहुत ज्यादा जानते हैं, because he is directly in the respective field. He is not a generalist, he is a specialist, a person who has served his tenure in the Indian Army. So this creation of the sport of CDS will make our national security more effective as well as more economical. So therefore, today in this announcement of the CDS, okay, and in this announcement of the second name of the CDS, today we could see that the government is very much interested today for transferring the nature of military conflicts, the impact of technology, and the need for modernization, coordination, and jointness of these three armed forces. And this leads to a hope that tomorrow there would be a better defense policies to even tackle our respective enemies. At last, the creation of the post of the CDS will bring greater efficiency, transparency, and accountability into decision making on डिफेंस मैटर. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सब चीज हम लोग एक साथ लेके आएंगे सो दैट वी कुड कोऑर्डिनेट प्लान एंड वी कुड टैकल आवर एनिमी विद अ हैवी हैंड. ठीक है, तो यहाँ पे वही सब एडिटोरियल के बारे में यहाँ पे बोला गया है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी कैन सी this is the man who was directly selected, Anil Chauhan ji, okay, who was directly selected to be the next CDS, the second CDS after the demise of our late CDS Bipin Rawat Sahab. Okay, so that's all for today. We have got a 5 questions, so you can directly attempt these questions. Okay, the MCQs will be provided to you in the Telegram channel of us, so do join our WhatsApp as well as Telegram channel with the link given below. So that's all for today. Thank you and Jai Hind.